Killar Road, deep in the Himalayas, is one of the most dangerous in the world. One reckless turn could send drivers hurtling down nearly 11,000 feet. अगर आप मौत से डरते हो तो आपको ट्रक ड्राइविंग तो क्या आपको ट्रक पे बैठना भी नहीं चाहिए। आने दो। क्योंकि यहाँ पे मौत किसी भी टाइम किसी भी पल आ सकती है। Still, every summer, Ankur Rawat makes several trips, delivering basic supplies to remote villages along this perilous route. It connects the rest of India to the isolated region of Pangi Valley, which is cut off for nearly 6 months of the year because of heavy snow. ये तो सर इनकी लाइफलाइन है, अगर फूड ही नहीं यहाँ पहुँचेगा तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? But sometimes trucks break down along the way, leaving drivers stranded for days. So, what does it take to navigate these heavy-duty trucks on this deadly path? We rode along with Anku through the mountains for 3 days to find out. Anku lives in the village of Palhoon with his wife Sabita and their children. He never really knows what the weather will be, so he packs plenty of blankets. They sit down for a family dinner before Anku sets off. He first picks up the truck from a private parking lot that rents them out. This one has a power steering and a 5600cc engine, ideal for driving through the mountains. जितने भी हम ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, हमारी सबकी मोड़नी होती है गाड़ी, ये सबकी मोड़नी होती है, ये हमारी जान होती है। मुझे अपने घर का उतना पता है जितना मुझे गाड़ी के कोने-कोने का पता है। Anku will make a few pit stops on this 107-mile journey. First, he'll travel about 10 miles from his home to a warehouse in Chamba to pick up food rations. Then, he'll pass through several small towns and go through Sach Pass, the highest point on Killar Road, before reaching his destination, the district of Pangi Valley. Today, Anku's loading 100-pound bags of wheat provided by the government to sustain India's most isolated regions. His truck can carry up to 12 tons. But any more than that and it could topple over. He always stops at this local temple along the way. तो मेरे तो बस ये जिंदगी में एक ही मकसद है कि मालिक सही सलामत रखे और मैं मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। The truck can hold up to 250 liters of diesel. But there are hardly any gas stations along the route. जब हम यहाँ पे आते हैं तो अपना तेल लेके भी आते हैं क्योंकि ट्रक टुक्को में फिर तेल खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे? The terrain starts off pretty smooth. But as the truck goes uphill, it gets rough. And his speed drops below 10 miles per hour. At this point, the road is only 10 feet wide. And there's barely room for 2 cars to drive next to each other. So when another vehicle approaches, Anku needs to carefully reverse, sometimes by hundreds of yards. इन सड़कों पे 2 घंटे 3 घंटे एक पिकअप आगे से ट्रक रुकिए 4 घंटे 5 घंटे पूरा दिन जाम लगा नॉर्मल सी बात है। Luckily, he's traveling with truck conductor Mohammad Nisar Mughal, who jumps out and guides Anku around blind spots and dangerous turns. आगे पीछे देखना पड़ता है कि गाड़ी कहीं टच नहीं हो जाए ऊपर। कभी गाड़ी नहीं चढ़ती है तो मतलब पत्थर लगा के फिर चढ़ाना पड़ता है ऐसे। There are no guardrails to prevent them from veering off. क्योंकि पहाड़ों पे कई बार ऐसा होता है कि बारिश में जब हम गाड़ी चलाते हैं अगर ब्रेक
2 इंच अगर लेट लगी ना तो गाड़ी स्किड हो जाती है. In July 2022, a jeep rolled into a gorge, killing 5 people. And in 2023, 7 people died after the vehicle was hit by a landslide on this route. होता है कई बार ऐसा, हमारे सामने गाड़ियाँ गिरती हैं, लोग मरते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आज ये है, कल नंबर मेरे भी आ सकते हैं. But after years of experience as a trucker, Anku isn't easily intimidated. इन्हीं रोड में सीखे हैं, इन रोड में चलते हैं. बस मेन रोड पे जहाँ 4 लाइन आ गई वहाँ हमारी मेरी टांगे कांप जाती है भाई. All the traditional rules of the road don't really apply. Truck drivers communicate with hand signals, which becomes important during moments of congestion like this. हमने ऐसे किए तो ऐसे किया, कई बार हम ऐसे करते हैं, कई बार हम ऐसे करते हैं, कई बार हम ऐसे करते हैं, तो इसके बड़े साइन होते हैं. They also use pressure horns, which are illegal in India. But Anku says they need them for safety reasons. अगर इन पहाड़ों पे ये प्रेशर हॉर्न ना हो तो आगे से आने वाली गाड़ी को क्या पता लगेगा कि छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी है. Anku doesn't wear a seatbelt either, even though under Indian law he's required to. He says for this type of driving, they can do more harm than good, as they restrict the driver from leaning over. सीट बेल्ट पहाड़ों पे मौत है. But stats on semi-truck accidents show that drivers are more likely to survive if they buckle up. In this state alone, trucks and buses accounted for 12% of all fatal crashes in 2022. Landslides and snowfall have also weakened this road structure, forming ditches and piles of debris. So the government hires contractors to keep repairing it. Killa Road started off as a footpath with narrow trails carved by shepherds and traders who were trying to reach the remote Pangi Valley. Legend has it that residents of Chamba fled to the hidden region to escape Mughal invaders. Others believe that in the 16th century, the king of Chamba banished criminals to this isolated region. These days, Killa Road is used mainly by tourists, bikers seeking an adrenaline rush, truckers, and local residents. After about 8 to 9 hours of driving, the men pull over. They make a fire to start cooking with groceries they brought from home. But even during dinner, they stay vigilant in case they are confronted by wild animals or thieves. रात को गाड़ी लोड होती है तो लेकिन हम इतने मतलब चौकस होते हैं कि जरा सी भी आवाज़ कर दे गाड़ी तो एकदम नींद खुल जाती है कि क्या हुआ. There are no hotels for miles, so they sleep in the truck's cabin. आप मुझे किसी होटल में ले जाओ, VIP कमरे पे आप मुझे सुला दो ना, पर जो मुझे फील गाड़ी में बैठ के आता है ना, तो ये तो हमारी माँ होती है, हमारा घर होता है ये. चलिए उठ जा. The next day, they start driving at the crack of dawn. Killa Road gets even more treacherous and spectacular as trucks pass through waterfalls and incredibly tight spaces. जब मैं ये ट्रक लेके आया था तो मुझे लोग मना कर रहे थे कि भाई ये बड़ी हाइट है. Vehicles along this route often run into mechanical problems. This truck carrying grains to Pangi Valley broke down after the gearbox stopped working. The mechanic says the nearest store for car parts is about 180 miles away. मैं ही आता हूँ यहाँ. अब हम यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर जाएंगे पैदल. वहाँ पर जरा सा सिग्नल आएगा मोबाइल का, वहाँ से फ़ोन करेंगे, मैसेज देंगे किसी बंदे को, फिर वहाँ से सामान भेजेंगे वो. The whole process will take 4 days, and the truck will just stay here until then. Anku and his team carry on with their journey. At around midday, they stop at a local dhaba for a quick bite. These cafes cater to truck drivers.
The people who run them, like Lakshman Sharma, understand how hard it is to drive around here. भगाने की रोड नहीं है तो भगाना कहाँ से है? बंदा पैदल चलेगा तो बंदा पहले पहुंच जाएगा बैरागढ़, और किलाड़ में तो गाड़ियाँ उसके बाद पहुंचेगी. But even these cafes close down once it starts snowing around October. और इन ड्राइवरों को हम इतना लाइक करते हैं कि जो इस रोड पे ये ट्रक और बस लेके आते जाते हैं, और इनकी हिम्मत को हम दाग देते हैं. While Anku's job is an essential service, he only makes about 10,000 rupees a month. That's about $4 a day, enough to buy a few pounds of rice and lentils in India. हमारे भारतवर्ष में ना सबसे ज़्यादा मेहनत ट्रक ड्राइवर थे और सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं है. He could make about 25,000 rupees a month as a personal driver in Delhi or Bombay. But his heart belongs here in the Himalayas. And he wants the whole world to know how beautiful these mountains are. हाय गाइस, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे भाई. So he vlogs on the side. He has about 50,000 followers and counting on YouTube. ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे भाई पांगी हम नहीं जाएंगे यार. मुझे उतनी ब्लॉगिंग तो करनी आती नहीं, पर मैंने कोशिश की. तो ब्लॉगिंग से पैसा तो नहीं आया, पर चलो इतना है कि लोग जाने लग पड़े. और मैं दिखाता हूँ लोगों की पहाड़ों पे कितने रिस्की काम होता है. But the most treacherous part of this route is getting through Sach Pass. At nearly 14,500 feet, Sach Pass is one of the highest navigable places in the state of Himachal Pradesh. Drivers are advised not to stop at the top for more than 5 minutes because there's so little oxygen in the air. The road through here is even more narrow, barely more than 8 feet wide. So, Anku needs to be extremely mindful when navigating the steep slope. पर साच पास में आज दिन तक जो गाड़ी फंसी है ना सीजन के टाइम में, तो वो गाड़ी कभी फिर बनी नहीं. फिर और साच पास में आप जैसे मैं ट्रक है हमारा ना, हम ट्रक वाले कभी गाड़ी बंद नहीं करते हैं. अगर गाड़ी बंद कर दी फिर मुड़ के स्टार्ट नहीं होगी. It takes him about 3 to 4 hours to go through this 9-mile stretch. उसाई अपने साइड रखो. आने दो 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 सही आने दो 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 आने दो. After they're through, Anku recaps the journey for his followers. ओ भाई वो क्या ही रोड था. एक तो आधा टायर बाहर और ऊपर गाड़ी खराब हो गई ना, खाने को कुछ. इतने स्ट्रगल को हम झेलते हुए ना अब पहुंच गए अपने किलाड़. Kilar is among 106 villages in Pangi Valley, which has a total population of just 18,000 people. साल के तो कोई 6 महीने तो ये डिस्कनेक्ट ही रहता है. ये वनस्पति वगैरह ये सब खत्म हो जाती है एक बर्फ से ही. Almost 200 trucks head there every summer, carrying food, medicine, and other basic supplies. They're stored at this warehouse for the winter, and residents buy them at a subsidized rate set by the government. अगर वो ट्रक ना पहुंचे तब तो सर इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी. As soon as they're done unloading, Anku and his colleagues hit the road. Along the way, they pass by a nomadic community called the Gujjars. For Anku, catching up with them over a cup of tea has become a ritual. Even though driving through these mountains is a part of Anku's identity, the job has worn him down. शुरू में जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे मेरे पापा बोलते थे कि भाई मैंने कोई एरोप्लेन वगैरह खिलौने वगैरह लेके आता था, तो मैं बोलता कि मुझे ट्रक चाहिए, ट्रक चाहिए.
अब शौक था पहले, अब मजबूरी बन चुकी है। But he still yearns for the day he can truly enjoy the breathtaking nature around him. तो मैं 7 सालों में जितनी बार ट्रक लेके आया ना, मुझे वो मौका ही नहीं मिला कि मैं ध्यान से देखूं। फैमिली के साथ आऊँगा मैं तो फिर मैं पूरा इंजॉय लूँगा थोड़ा रुक के ना।